Okay, hello everyone, and welcome to CFA Level 1 quant section. My name is Mohammad Rahim, and I am going to be your instructor for this throughout the program. और आप लोग ये नोट करें कि जो CFA की जो लेवल 1 की जो वीडियोस हैं ये हम लोग बेसिकली यूट्यूब चैनल के ऊपर पोस्टिंग करेंगे मोस्टली. That's going to be our main platform of publishing this content. और आज जो है हम सबसे पहली रीडिंग के साथ स्टार्ट कर रहे हैं. बाय द वे, this is the first learning module, right? LM from the quant section, right? Quantitative methods is the section. It's a topic in the CFA level 1 curriculum. और इसके अंदर लर्निंग मॉड्यूल्स हैं, मल्टीपल लर्निंग मॉड्यूल्स हैं. दिस इज़ बेसिकली फॉर 2024. और 2024 के अंदर जो है वो 2024 के करिकुलम के अंदर बेसिकली क्वांट के अंदर आई थिंक 12 लर्निंग मॉड्यूल्स हैं, राइट? 12 लर्निंग मॉड्यूल्स इन द क्वांट सेक्शन, राइट? और ये जो है रेट्स एंड रिटर्न, जो कि सबसे पहला लर्निंग मॉड्यूल है जो हम आज स्टार्ट कर रहे हैं, राइट? तो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर, विद द लर्निंग मॉड्यूल. नाउ लेट्स स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन टू द रीडिंग. नाउ इंटरेस्ट रेट्स. नाउ प्लीज नोट कि ये जो चैप्टर है ये इंटरेस्ट रेट्स और जैसे मैंने बोला कि इंटरेस्ट रेट्स एंड रिटर्न के ऊपर है, राइट? तो बेसिकली आप लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि CFA के अंदर जिसके अंदर जो बेसिकली आपको ट्रेन कर रहा है टू बिकम फाइनेंशियल एनालिस्ट, इस प्रोग्राम के अंदर आप लोग इंटरेस्ट रेट से डील कर रहे होंगे, ठीक है? बहुत आपका बहुत ज़्यादा इस किस्म के क्वेश्चंस के अंदर आपका यू विल कम अक्रॉस लॉट ऑफ दीज क्वेश्चंस जिसके अंदर आपको इंटरेस्ट रेट्स का डील करना पड़ेगा, राइट? तो जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो उनकी मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस होंगी, ठीक है? प्लीज़ नोट कि हम लोग एक फाइनेंशियल एनालिस्ट के पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं. तो इंटरेस्ट रेट्स हम स्पेसिफिकली इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट फाइनेंस के पर्सपेक्टिव से हम बात करेंगे, ठीक है ना? ये आप लोग जो आपकी मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन आपको मिलेंगे उसके अंदर बहुत दफ़ा ये होगा, स्पेशली नॉट जस्ट CFA लेवल 1 बट CFA लेवल 2 एज वेल. उसके अंदर ये होगा कि आप लोगों को इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे जिसके अंदर आप लोगों को बहुत दफ़ा इंटरेस्ट रेट्स दिए हुए होंगे, ठीक है? या आप लोगों को कैलकुलेट करने होंगे, ठीक है ना? तो ये बेसिकली दो तीन किस्म की सिचुएशंस होंगी. तो ये जस्ट कीप दैट इन माइंड, राइट? कि आपकी जो ऑन द एग्जाम यू आर गोइंग टू कम अक्रॉस क्वेश्चन इन विच यू विल बी गिवन द इंटरेस्ट रेट्स, राइट? और उसके एज अपोज टू दैट यू विल ऑल्सो हैव सम क्वेश्चन विच यू विल बी रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द इंटरेस्ट रेट्स. तो ये आपका बहुत एक क्रिटिकल टॉपिक है. तो इसके ऊपर आई वुड हाईली रिकमेंड यू गाइज फोकस हेविली ऑन दिस, राइट? नाउ अभी इस चैप्टर के अंदर मैंने बेसिकली टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जो बेसिकली नेक्स्ट चैप्टर आने वाला है वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी होना है. और विच इज आई वुड से इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट topics, if not the most important topic in your CFA studies, right? Because as you will see के time value of money not just at level 1 but CFA level 2 के अंदर तो और भी ज़्यादा importance के साथ और बहुत ज़्यादा depth के अंदर आपको यही concept जो ये topic जो है ये आपका apply होते हुए नज़र आएगा. तो you guys will this is one of the most important concepts. और टाइम वैल्यू ऑफ मनी के अंदर बेसिकली टाइम वैल्यू ऑफ मनी के अंदर आप इंटरेस्ट रेट्स को बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन आप देखेंगे, ठीक है ना? स्पेशली व्हेन वी आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ व्हेन वी टॉकिंग अबाउट डिस्काउंटेड कैश फ्लो, DCF. ये आप लोग आगे जाके वी विल डिस्कस दिस इन लॉट ऑफ डिटेल, राइट? तो इसके अंदर जो हम लोग डिस्काउंटिंग कर रहे होते हैं
जो हम डिस्काउंट करेंगे फ्यूचर कैश फ्लोज को. एंड बाय द वे DCF इज अ मेथड यूज इन ऑर्डर टू वैल्यू एसेट्स. ओके, एसेट्स और सिक्योरिटीज. ये हम सारी डिटेल्स जो है हम बाद में जाके स्टडी करेंगे. इफ यू डोंट नो सम ऑफ दिस terms or concepts, so don't worry, we are going to discuss all of this in a lot of detail in later videos, right? So this is what's going to happen. And so yeah, to coming back to this specific topic, मैं बात जो emphasize करना चाह रहा हूँ वो ये है कि आपकी जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा, यानी कि जो इस चैप्टर का जो ये टॉपिक चैप्टर जो है, ये लर्निंग मॉड्यूल जो है, जो इंटरेस्ट रेट्स इन रिटर्न है, उसका बेसिकली बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन आपको आगे आने वाली है. In not just in level 1 but level 2 as well. Not just in level 1 but level 2 as well, right? I'm going to remove everything and let's move to the next slide. Now इस चैप्टर के अंदर जो है हम सबसे पहले जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव हमारा है, राइट, दैट इज बेसिकली इन दिस लर्निंग मॉड्यूल, यानी कि इस चैप्टर के अंदर ये सबसे पहला लर्निंग ऑब्जेक्टिव है आपका, जिसके अंदर आप लोग ये देखेंगे कि आपके जो इंटरेस्ट रेट्स हैं उनको इंटरप्रेट बेसिकली 3 तरीके से किया जाता है. ठीक है ना, आपके जो इंटरेस्ट रेट्स हैं उनको 3 तरीके से इंटरप्रेट किया जाता है. और ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव आपको एक्सपेक्ट करता है, या आपको इट बेसिकली एक्सपेक्ट यू टू नो द 3 डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस, राइट, ऑफ इंटरेस्ट रेट्स. यानी कि, और वो कौन सी इंटरप्रिटेशन है, यानी कि रिक्वायर्ड रेट्स ऑफ रिटर्न. This is the first interpretation of interest rates, right? The second interpretation of interest rates is discount rates, और third जो interest rates की interpretation है वो opportunity cost है. तो इन तीनों different interpretations की आपको बड़ी अच्छी तरह understanding होनी चाहिए. You should know in which situation क्या चीज़ interest rates को किस perspective से हम लोग देख रहे होते हैं. ठीक है ना. इफ यू डोंट अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन बाय दैट, डोंट वरी, वी आर जस्ट गोइंग टू गो इनटू इट वेरी सून, राइट. तो ये सिचुएशन है. और राइट, तो ये जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है, इट एक्सपेक्ट्स अस टू इंटरप्रेट एंड एक्सप्लेन एन इंटरेस्ट रेट एज अ सम ऑफ रियल रिस्क फ्री रेट एंड रिस्क प्रीमियम्स, राइट. तो ये बेसिकली बाय द वे ये जो वीडियो है ये बेसिकली मैंने 2 पार्ट्स में, आई एम गोइंग टू डिवाइड इट. फर्स्ट पार्ट के अंदर ये इसी लर्निंग ऑब्जेक्टिव को, दिस लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ और हेयर, इसको मैं बेसिकली 2 पार्ट्स में वीडियो डिस्ट्रीब्यूट करने लगा हूँ. जिसके अंदर सबसे पहले हम लोग इंटरप्रिटेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट्स को देखेंगे, राइट. और सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, राइट, उसके अंदर हम लोग इसी लर्निंग ऑब्जेक्टिव के सेकेंड पार्ट को देखेंगे, यानी कि जो एक्सप्लेनेशन है ऑफ इंटरेस्ट रेट एज सम ऑफ रियल रिस्क फ्री रेट एंड रिस्क प्रीमियम्स, राइट. ये बेसिकली हम सेकेंड पार्ट में हम वीडियो में देखेंगे, राइट. तो इसको हम बेसिकली नाउ लेट्स मूव अहेड एंड लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट of this learning objective, which is we are going to learn how to interpret the interest rates from 3 perspectives, right. Now before I dive into the interpretation of interest rates, I'd like to point out कि interest rates जो हैं वो time value, TVM, by the way, TVM stands for time value of money. Okay, TVM is just an abbreviation, it's just shorter, it's just faster, right. Instead of writing time value of money every time, I just like to use the abbreviation, it's faster, right. Now तो इंटरेस्ट रेट्स और टाइम वैल्यू ऑफ मनी का आपस में क्या रिलेशनशिप है, ठीक है ना. अभी हम इसको थोड़ा सा इस पॉइंट को डिस्कस कर लेंगे और फिर हम आगे मूव करेंगे, राइट. विच इज गोइंग टू बी वेयर इन दिस वीडियो, इस वीडियो के हम डिस्कस करेंगे कि इंटरप्रिटेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट्स क्या होती है. वो भी अभी हम लोग अगली फ्यू स्लाइड में चेक करेंगे. ये सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड है कि इंटरेस्ट रेट्स और टाइम वैल्यू ऑफ मनी के अंदर क्या रिलेशनशिप है. नाउ टाइम वैल्यू ऑफ मनी एस्टैब्लिशेस द इक्विवेलेंस between cash flows occurring on different dates. Okay, सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बात बताऊंगा. बाय द वे ये जो क्वांट सेक्शन है इसके अंदर
आपकी एक प्री रिक्विजिट रीडिंग भी आई है 2024 के अंदर, इस साल के करिकुलम में जो हम लोग इस वक्त यूज़ कर रहे हैं, इसके अंदर आपकी एक प्री रिक्विजिट रीडिंग आई है जिसके अंदर आपकी टाइम वैल्यू ऑफ मनी और इंटरेस्ट रेट्स के फाउंडेशंस दिए हैं, ठीक है ना। आई एम नॉट गोइंग टू गो टू अ लॉट ऑफ डिटेल, लेकिन मैं जितनी बेसिक्स की रिक्वायर आई थिंक आई एम गोइंग टू गो इनटू इनफ डिटेल सो यू गाइज अंडरस्टैंड एज टू व्हाट्स गोइंग ऑन। बट इफ यू गाइज वुड लाइक फॉर मी टू गो इनटू द एंटायर प्री रिक्विजिट चैप्टर, जो यानी कि इस चैप्टर क्वांट का प्री रिक्विजिट है, राइट, वन ऑफ द प्री रिक्विजिट्स ऑफ क्वांटिटेटिव मेथड्स, राइट, ऑन द CFA level 1, तो आप यू गाइज के वेलकम टू कमेंट इन द वीडियो सेक्शन बिलो, in the comment section below, और मैं उसके ऊपर I can make a video for you guys. But anyway, right now we are going to go into enough details so you guys can understand as to what's going on. Now time value of money का सबसे पहले मैं जो point outline करना चाहूँगा वो ये है, वो this is called a timeline, okay? A timeline, right? This line over here, this line you see, blue line you see over here is called a timeline. Now इस timeline के ऊपर multiple points in time होते हैं, okay? Let's say this specific timeline has 2 points in time. The first being this point, जिसको मैं लिखूंगा t is equal to 0 या the present point in time, right? Or right now, right? Present, right? Present means as we speak, right now, okay? So this is the first point in time represented by t is equal to 0. T means time 0, okay? टाइम जीरो नॉर्मली मोस्ट ऑफ द टाइम आपके मोस्ट टाइम नहीं बल्कि आप उसको ये समझ लें कि जब आप टाइम लाइन के ऊपर टी इक्वल टू 0 देखें तो आप समझ जाएंगे दिस रिप्रेजेंट्स द प्रेजेंट पॉइंट इन टाइम, टी इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट्स द प्रेजेंट पॉइंट इन टाइम। और फिर ये अगला आएगा टी इक्वल टू 1, ओके। नाउ प्लीज नोट कि इस टाइम लाइन के ऊपर प्लीज नोट मैं अभी हम लोग इंटरेस्ट रेट पे जाएंगे, लेकिन आई एम गोइंग टू गो टू इंटरेस्ट रेट, आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू अंडरस्टैंड के टाइम लाइन्स क्या होती हैं, बिकॉज टाइम लाइन्स के अंदर हम लोग बेसिकली डिस्काउंट कैश फ्लोज या टाइम वैल्यू मनी कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई कर रहे होते हैं, और उसके अंदर हम लोग इंटरेस्ट रेट्स को अप्लाई करते हैं, राइट, रिलेशनशिप होता है। तो फॉर यू टू बी एबल टू अंडरस्टैंड interest rates from a financial analyst perspective, so you need to understand timelines first, right? That's why I'm taking the time out to help you guys understand के timelines किस तरह काम करती हैं. Now timeline जो है, इस timeline के ऊपर t is equal to, I'm going to remove everything for a minute, right? So this is a timeline, t is equal to 0 and t is equal to 1, okay? Now this is the present point in time, okay? T is equal to 0 and this is t is equal to 1. This point right here, which represents, let's say in this example, is going to be 1 year from now, okay? From now. In other words, ये जो बीच में सारा जो पॉइंट है, ये दो डिफरेंट पॉइंट जो हैं, दो ये पॉइंट और ये पॉइंट, इनके बीच में जो टाइम जब है वो टाइम इलैप्स जब अगर मैं इस पॉइंट पे खड़ा हूँ, मैं इस वक्त या हम इस पॉइंट पे खड़े हैं इस वक्त राइट नाउ, t is equal to 0, जब 1 साल गुजर जाएगा तो हम इस पॉइंट पे आ जाएंगे, राइट? t is equal to 1 पे आ जाएंगे, right? Again, I'm going to remove everything. So t is equal to 0 and t is equal to 1, okay? Now, अब ये टाइमलाइन के ऊपर what you guys need to understand is के हर टाइमलाइन के ऊपर जो डिफरेंट पॉइंट इन टाइम होते हैं उनके कोई एसोसिएटेड कैश फ्लोज भी होते हैं, राइट? So let's say we have a cash flow of $950 over here and let's say 1000 over here, okay, right? तो ये, and again please remember I'm just explaining the basic concept of timeline to you. हम लोग ये टाइमलाइन का जो कॉन्सेप्ट आप लोग ये समझ लें कि आप लोगों के इस कॉन्सेप्ट को इतना यूज किया जाएगा कि you guys have no idea throughout level 1 and level 2, right? और मैं आप लोगों को अभी से एक आपको हेड्स अप दे दूं कि जब आपके क्वेश्चंस आएँ, मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ, स्पेशली टाइम वैल्यू मनी के, डिस्काउंट कैश फ्लोज के, राइट? और डिस्काउंट कैश फ्लोज सिर्फ एक टॉपिक के अंदर नहीं बल्कि आपके मल्टीपल टॉपिक्स में यूज होगा, यानी कि इक्विटी के अंदर क्वांट में तो हो ही रहा है, ठीक है, क्वांट में तो एज ए चैप्टर आ रहा है, लेकिन इवन इन इक्विटी, फिक्स्ड इनकम, कॉर्पोरेट फाइनेंस, डेरिवेटिव्स में भी एक हद तक, और ऑल्ट के अंदर भी स्पेसिफिकली रियल एस्टेट के अंदर ये यूज होगा, ठीक है ना? तो ये आप लोगों को समझने की ज़रूरत है. यू नीड टू दिस इज अ वेरी क्रिटिकल कॉन्सेप्ट.
और आप लोगों को हर टाइम वैल्यू मनी क्वेश्चन के अंदर एक टाइमलाइन जरूर बनाना चाहिए, ताकि आप लोगों को एक बेसिक इट हेल्प्स यू अवॉइड मिस्टेक्स. मैं सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि द रीज़न वाई आई एनकरेज स्टूडेंट्स टू मेक टाइमलाइंस, बिकॉज जब आप ये टाइमलाइंस बनाते हैं तो आप लोग बहुत सी मिस्टेक्स को अवॉइड करेंगे जो अगर आप लोग नहीं बनाए तो आप लोग करेंगे. मैं आपको बता दूं कि मैं इवन विद ऑल द टाइम दैट आई स्पेंट स्टडीइंग एंड टीचिंग, अभी तक आई स्टिल बिकॉज वी बिल्ट अप द हैबिट of making timelines, so I still this day I'm in the habit of making timelines, right? Because it really helps you clarify, it really takes away all the ambiguity, या दिमाग में को आपकी confusion हो रही है वो सब confusions हटा देता है, ठीक है ना. It's a very good starting point for any time value of money, या सारे जो आपके discount cash flows के chapters हैं, asset valuation के अंदर आप कर रहे हैं, तो आप ज़रूर टाइमलाइंस बनाएं, राइट. नाउ तो ये दो पॉइंट्स इन टाइम हमने बनाए हैं, t इज इक्वल टू 0 और t इज इक्वल टू 1. ओके, नाउ अच्छा, लेट मी जस्ट गिव मिनट वाला रेफर टू माय नोट्स जस्ट टू मेक श्योर के आई जस्ट गोना सी के व्हाट क्वेश्चन I should take next, right? So anyway, so time value of money establishes the equivalence between cash flows occurring on different dates, right? Now, time value of money के अंदर सबसे important जो concept, this is the timeline. Please note, timeline जो है वो time value of money का एक tool है जो आप use करते हैं in order to give you a better understanding of the situation. राइट, क्योंकि टाइम वैल्यू मनी के अंदर आपको डिफरेंट सिचुएशंस दी जाएंगी कि ये सिचुएशन है, इसमें ये कंपनी है, इसकी ये कैश फ्लोज हैं, फ्यूचर एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज हैं, और उनकी आप उनको डिस्काउंट करें ताकि आप वैल्यू निकाल सकें, ठीक है ना. दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूजेस ऑफ टाइमलाइंस, राइट, यानी कि इन रिलेशन टू टाइम वैल्यू मनी, राइट. तो नाउ the most important thing that you guys have to understand is now this concept is related to time value of money, okay. And so yeah, one more time, timelines are a tool which are used in order to help you understand how time value of money की जो questions हैं उनको they help you, timelines will help you bring about more clarity in your mind regarding time value money questions, right? So now time value of money का एक मैं आपको बहुत critical concept बताते चलूँ कि वो ये है कि the time value of money states, right, कि cash received today is preferred to cash promised in the future, right? यानी कि इसका मैं I'm going to remove everything from the screen. इसको मैं ये बोलूँगा कि मैं अगर आपको ऑप्शन दूँ, ये जो मैंने आपसे बात अभी की है, यानी कि कैश रिसीव टुडे इज प्रेफर्ड टू कैश प्रॉमिस इन द फ्यूचर, दिस इज बेसिकली द जिस्ट ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी, राइट. कि अगर मैं आपको बोलूँ कि मैं आपको ऑप्शन दूँ कि t इज इक्वल टू 0 पे $100 ले लें मेरे से, या t इज इक्वल टू 1 पे मेरे से $100 ले लें, ठीक है. इफ आई गिव यू दिस ऑप्शन, which option are you going to choose? Are you going to take money from me? Are you going to say, okay, I would like you would say to me, yes, I would like to take the money at the present point in time, or would you choose this option, right? And why? Actually, this is a good question. I would like for you guys to pause your videos over here, think about it. मैंने जो आप लोगों से क्वेश्चन आपको मैंने पूछा है, इसका आप लोग नीचे जवाब दें कि would you guys choose option 1 or option 2, and most important, why? I don't want you guys to say I'm going to choose option 1 or option 2. I want you to give your explanation right now. Give your explanation with it, right? What's your logic behind it? And I would encourage you guys to pause the video, not go ahead, because आगे of course आपको जवाब मिल जाएगा. Pause your videos, give your answers right now. This would be an interesting exercise for you guys, right? And let's see who gets it, who can get the right answer, right? Let's see.
So anyway, I'm going to give you guys a minute, and so you guys can pause and give your answers below, right? Okay, so अब ये तो हमने so now coming back to the question, मैंने आप लोगों से भी पूछा, उसका जवाब मैं आप लोगों को दूंगा कि उसका जवाब एक्चुअली क्या है, ठीक है ना? And I'm also going to give you the reasoning behind it. That's the most important part. It's not just about saying कि I'm going to choose option 1 or option 2. That's not enough, right? ठीक है, वो बहुत बहुत तुक्का भी लग सकता है, right? So you have to understand कि you guys have to give the reasoning behind it, right? तो सबसे पहले मैं let me tell you guys कि a rational investor or rational analyst is going to choose option 1, right? And they are not going to choose option 2. And I'll tell you why. The reason behind this is, and I'm going to remove everything from the screen for a minute, the annotations. The reason why I will choose $100 at this point, t is equal to 0, is because I am going to, if I or whoever is given the option, if you guys are given the option, if I'm giving you the option, then you should choose option 1, because if you guys get the cash at this point, तो आप लोग उस कैश को लेकर किसी इन्वेस्टमेंट में, and I'm going to go into this later, I don't want to complicate things by too much, but just understand that there is a type of investment called a risk-free asset, okay? Right? Treasuries होती हैं, we'll go into that later, but just understand that there's an asset, the types of assets in which without taking much risk or without taking any risk, you can basically earn the required rate of return. So let's say मैं अगर एक risk-free asset के अंदर invest करता हूँ, let's say मैं 3% साल का कमा सकता हूँ, right? तो if I've taken this $100 right now, please note t is equal to 0 पे मैंने आपसे लिए at the present point in time. तो जब एक साल गुजर जाएगा, जब t is equal to 1 पे हम पहुंचेंगे, तो ये $100 एक्चुअली $103 बन चुके होंगे, राइट? बिकॉज इफ आई टेक $100 multiplied by bracket open 1 plus r raised to power n, and by the way, this is the formula for calculating the future value. We will go into this in more detail later. Actually not later, but कुछ questions में हम solve करेंगे, लेकिन if you guys don't understand this, then please note basics जो ये बिल्कुल basic future value, present value के जो concepts हैं, ये prerequisite question chapter के अंदर आ चुके हैं quant के, right? Time value of money concepts, I think that's the name of the question, but anyway, you guys can refer to your curriculum. उनमें से prerequisite chapter है 2024 के syllabus के अंदर, उसके अंदर ये एक prerequisite reading में आया हुआ है, right? Time value of money, interest rates, discount rates, interest rates, right? तो फ्यूचर वैल्यू का ये बेसिक फॉर्मूला है. दिस फॉर्मूला इज द फ्यूचर वैल्यू फॉर्मूला. और इस फॉर्म, एंड आई एम गोइंग टू रिमूव अगेन एवरीथिंग फ्रॉम द स्लाइड, माय एनोटेशंस. तो बेसिकली ये जो आपके $100 आपने इस पॉइंट पे t इज इक्वल टू 0 पे लिए एट द प्रेजेंट पॉइंट इन टाइम, ये एक साल के बाद, 1 year from now, ये बेसिकली $103 बन गए, राइट? सो अब आप खुद सोचें कि would you not have been worse off had you chosen option 2, right? If you had chosen option 2, यानी कि which was basically taking $100 after 1 year, यानी कि at this point, then you would have actually made a loss of this $3. You would have lost out on this extra $3, right? Which you could have earned anyway had you just chosen option 1, right? Right? So that is the logic behind why you should always why you should actually choose
why cash flows are why time value of money states ke a cash flow received today is preferred to cash flow promised in the future, right? So anyway, ये बेसिक इसकी एक्सप्लेनेशन है. इसके लिए कुछ और भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं कि देयर आर अदर टाइप्स ऑफ रिस्क एसोसिएटेड विद इट. वो डिस्काउंट रेट से एसोसिएटेड होते हैं, हम लोग डिटेल में बाद में जाएंगे. लेकिन दिस इज अ वेरी बेसिक एक्सप्लेनेशन ऑफ व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड के व्हाई कैन यू why a cash flow received today is preferred to a cash flow received at a future point in time. Right? And by the way, note same cash flows, okay? Is I'm seeing that $100 at this point t is equal to 0, and again $100 at t is equal to 1. Okay, ये cash flow दोनों same है, right? If I were to say कि ये t is equal to 0 पे 100 है और इधर t is equal to 3 पे 100 नहीं बल्कि let's say 115 है, तो फिर सिचुएशन अलग हो सकती है. वो भी हम लोगों को डिस्काउंट रेट्स देखने पड़ेंगे कि डिस्काउंट रेट या इंटरेस्ट रेट्स क्या है. वो वी विल गेट इनटू दैट लेटर. राइट नाउ इतना आपके लिए काफ़ी है समझने के लिए कि जो डिस्काउंट रेट्स हैं वो आपकी जो डिस्काउंट रेट्स हैं वो आपके जो कैश फ्लोज हैं, इट इज़ बेटर टू रिसीव अ कैश फ्लो सूनर रादर देन लेटर. राइट, आई एम गोना रिमूव एवरीथिंग. ओके, now this is something again we've discussed this as well. Cash received today is preferred to cash received or promised in the future, right? अब हम आ जाते हैं एक बहुत क्रिटिकल कॉन्सेप्ट. ये दोनों जो पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए हैं. अब लेट्स कम टू दिस पॉइंट राइट ऑन दिस स्लाइड कि इंटरेस्ट रेट और यील्ड डिनोटेड बाय आर इज द रेट ऑफ रिटर्न दैट रिफ्लेक्ट्स द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंटली डेटेड और डिफरेंटली टाइम्ड कैश फ्लोज. ओके, please, I want you guys to take a minute and read this point and try to understand, try to develop basic understanding, and then I will go into it in a minute. Right, I will just help you guys understand what this is actually what's actually going on over here. Right. ओके, अब एक जो पॉइंट ओके, नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट help to and we're going to discuss this point. Okay, this point right here, we're going to discuss this. Now again, one more time, I'm going to read it. An interest rate or yield, right, you will soon see what yield is, denoted by R, okay, is the rate of return, it's not the return. Please understand, return क्या होता है? रिटर्न क्या होता है आपका? लेट मी जस्ट पॉइंट आउट कि रिटर्न ये होता है कि मैंने 100 का खरीदा था और 200 में बेच दिया तो मेरा रिटर्न हुआ 100. राइट, दिस वाज माय रेवेन्यू, दिस वाज माय एक्सपेंस, दिस इज द रिटर्न. ओके, दिस इज द रिटर्न इन एब्सोल्यूट नंबर्स. दिस इज डॉलर्स. ओके, this is $200. I bought for I sold for 200. मेरी कॉस्ट या मेरे एक्सपेंसेस जो थे 100 थे, तो my profit was 100. right, this is the profit is the return. Okay, the rate of return you have to understand is going to be this profit, which is $100 divided by your revenue. Okay, so right, so ये मार्जिन से हम जा रहे हैं उसके अंदर अपना जो हमारी जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एनालिसिस है, लेकिन आई एम कीपिंग इट सिंपल. राइट, दिस इज आई एम ट्राइंग टू डोंट गेट caught up in the accounting of it, के revenue क्या, expense क्या. I'm helping you, try to focus on the concept. I'm trying to help you guys understand that is कि ये जो $100 है profit है, ये basically आपका absolute number में, absolute dollar term में आपका profit है. This is called the return. The rate of return है वो is going to be in percentage. Okay,
So $100, you made $100 by let's say you your margin में अगर बात करें, and we'll go into this later. Let's say you received 200, but you actually your net profit, right, was 100. So it's going to be 100 divided by 200, right? So your profit margin is going to be what? Your profit margin is going to be 0. Right? It's going to be 0.5 and then multiplied by 100, right? Percentage is convert करूँ तो it's going to be 50%, right? 100 divided by 200 multiplied by 100 is going to be 50%, right? Now this 50% is your rate of return, okay? The $100 is the return in absolute numbers and your rate of return is 50%, okay? Now I'm going to remove everything. Now, coming back to this question, coming back to interest rates and time value money, इस point के ऊपर where we are saying an interest rate or yield denoted by R is the rate of return that reflects the relationship between differently dated timed or cash flows, okay? Differently dated or slash timed, okay? Now, what do I mean by this? I mean that, let's say, if I am seeing that $950 received at t is equal to 0 or the present point in time is the same, is equivalent, not the same, is equivalent in value to $1,000 received at t is equal to 1, okay? Again, I'm going to repeat this question, this concept again, that if we say that t is equal to 0 पे अगर आप लोगों को $950, right, if you pay $950 at this point and if you receive 1,000 at t is equal to 1 or after, let's say, one period of 1 year, let's say, then if I say that these two cash flows are equivalent in value, right, then that means that the required compensation for receiving $10,000 in 1 year, $1,000 1 year from now, right? So if I say कि आप मुझे $900 अभी दे दें, मैं आपको एक साल के बाद $1,000 दूंगा, ओके? यानी कि $50. तो बेसिकली what we're saying is basically I am saying I'm going to pay you a $50 in profit or interest, right? Right? So what this means is that this $50, right, in profit or interest, right, is interest, right? Interest is basically the compensation. This is basically the compensation for investing or for lending $950 for 1 year, right? So in other words, अगर मैं आपको $900 अभी दे रहा हूँ या आप मुझे $900 दे रहे हैं, तो मैं आपको उस बदले में, let's say you are giving me $950 for 1 year, then उसकी compensation जो आप मांग रहे हैं, यानी कि आपका required rate of return जो है, not rate of return, आपको जो required return है, that's going to be $50, okay? और अगर आपका return $50 है, तो required rate of return of return is going to be $50, right? $50 divided by $950, okay? Which is going to be 5.26%. Okay, you guys can do this on the calculators and check. Lekin this is basically the return that we are going to be able to generate after, for this holding period, which is going to be 1 year, in this specific example, right? So $50 is the required return, while the required rate of return is going to be 5.26%, okay? Right?
So that's basically what's going on over here. Okay, I'm going to move everything. Let's move on to the next slide, and now let's talk about the interpretations of interest rates. Okay, let's talk about the interpretations of interest rate, जो कि हमने जो कि इस लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो हम अभी कर रहे हैं, जो कि मैंने मेंशन किया कि ये इस लर्निंग ऑब्जेक्टिव का फर्स्ट पार्ट है, इसके सेकंड पार्ट भी आएगा. तो इस फर्स्ट पार्ट के अंदर जो क्रिटिकल कॉन्सेप्ट, जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इज द इंटरप्रिटेशन और द थ्री डिफरेंट इंटरप्रिटेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट्स. सबसे पहली जो इंटरप्रिटेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट्स होती है वो होती है रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न. वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, राइट. और मैं उसको वापस एक बार आपको बता देता हूँ कि उसकी जो डेफिनेशन होगी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न की. रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज द मिनिमम, प्लीज नोट दिस, मिनिमम is the minimum rate of return an investor must receive to accept an investment. Please note, please, I'm going to repeat this again because it's so important. A required rate of return is the minimum investment. ये आप लोगों का ये CF Institute का एक बहुत favorite question है on the exam. It's possible you guys come across this question on the exam. वो आपको ट्रिक ये करेंगे. It's the maximum return investor expects from an investment, right? That is not true. What is true is this is the minimum investment, this is the minimum return that an investor is willing to accept for making an investment. Okay, I'm going to remove this because I'm going to remove everything. Let's move on to the second interpretation. The second interpretation of interest rates is that it can be considered to be the interest rates can be considered to be discount rates. Okay, now please note that हम लोगों ने जो पिछला एग्जाम्पल अभी डिस्कस किया जिसके हमने बोला कि जी आप अभी $950 हम मुझे दे दें और मैं आपको एक साल के बाद $1,000 दूंगा. ओके, इस सिचुएशन के अंदर जो है वो हमारा डिस्काउंट रेट कितना था? डिस्काउंट रेट वाज और आर वाज बेसिकली 5.26%, इफ यू रिमेंबर, राइट. वी जस्ट डिड दिस ऑन द प्रीवियस स्लाइड, राइट. मैं आप लोगों को इसकी जो इंटरप्रिटेशन दूंगा वो ये होती है कि प्रेजेंट वैल्यू एक चीज होती है. इफ यू गाइस हैव नॉट studied this before, let me know and I can make a video on this later. But present value and future value के जो concepts हैं, specifically present value के, right? जब हम present value calculate कर रहे होते हैं, present value क्या होती है? present value ये होती है कि आप एक future cash flow को, right? This is t is equal to 1, right? And this is at t is equal to 0. Okay? This represents the present point in time. Okay? And this cash flow it represents a future point in time or future value, right? This $1,000 is a future value, right? Because it's occurring, the cash flow is occurring at a future point in time. Or t is equal to 0 पे $950 is a present value because it's occurring at the present point in time. Remember that any cash flow, cash inflow या cash outflow अगर t is equal to 0 पे अगर कर रहा होगा, t is equal to 0 पे होगा तो वो that's going to be considered to be a present value. Okay? Negative हो, inflow या outflow, doesn't matter. प्रेजेंट वैल्यू होगा, ठीक है. नाउ फ्यूचर वैल्यू जो है, और फ्यूचर वैल्यू हर वो कैश फ्लो है जो प्रेजेंट वैल्यू से आगे, यानी कि एट एनी फ्यूचर पॉइंट टाइम, इस पॉइंट पे हो, इस पॉइंट पे हो, कहीं पे भी इन दो पॉइंट्स के बीच में कहीं पे भी जो कैश फ्लो है या इस पॉइंट के ऊपर भी जो है, सारे कैश फ्लो जो है फ्यूचर वैल्यूज है, राइट. एनी कैश फ्लो बियॉन्ड द प्रेजेंट पॉइंट टाइम या टी इज इक्वल टू 0, एनी कैश फ्लो बियॉन्ड टी इज इक्वल टू 0 is going to be considered to be a future value. चाहे cash inflow या cash outflow. Okay, so coming back to this, जो हम concept discuss कर रहे थे, जिसे हम कह रहे थे कि third interpretation है वो second interpretation जो of interest rate जो है वो है as discount rate. I'm going to remove everything. मैं एक बार ये बहुत messy हो गए. तो अगर मैं आपको बोलूं कि $950 at t is equal to 0 is the same as $1,000 received after 1 year or t is equal to 1, right? Then this means that आपका जो discount rate है, right? Discount rate is 5.26%. Why is that? Because अगर मैं इस $1,000 को लूँ, if I take this $1,000 which is occurring at 1 year from now, if I take $1,000
and divided by 1 plus r raised to power n is equal, यानी कि $1,000 divided by 1 plus 0.0526, right, raised to power 1. If we do this, we are going to get what? ये जो है, this is going to be equal to $950. If you guys have your calculators on you, I would encourage करूँगा कि आप लोग अपनी calculators को use करें, and you guys should be able to come up with the same answer, right? So if I take $1,000 divided by 1.0526, okay, you're going to get $950, okay, approximately. Yeah, so you're going to get $950, okay. This calculation shows, okay, that the discount rate in this specific situation is 5.26%, okay. This is the discount rate, okay, right? I'm going to remove everything. And finally, we're going to come to the last point in this lecture, in this video, which is basically the third interpretation of interest rates, is that it is an opportunity cost, okay. Interest rates can also be interpreted as opportunity cost, and I'm going to first read from the syllabus a little so you guys can understand. The third interpretation of interest rates is that interest rates can be considered to be opportunity cost. That's because an opportunity cost is the value. So what is the opportunity cost? Please note, an opportunity cost is the value that investors forgo by choosing a course of action, okay, right? So if I say that I am going to invest $950 or I'm going to lend $950 at the present t is equal to 0, or right now, I'm not going to spend it, okay. What am I doing? I'm not going to if I don't spend the money and if I invest it, then what's going to happen after 1 year? After 1 year, I'm going to have $1,000 or I'm going to earn a profit of $50, right? This is the first situation, scenario. However, if I choose to not invest the money and spend it today because it's my money, I can choose to do whatever I want with it. अगर मैं सोचता हूँ कि मैंने ये पैसे इन्वेस्ट नहीं करने या लैंड नहीं करना, I want to spend it today, then what's my opportunity cost? My opportunity cost is going to be 5.26% or this $50, right? So $50. In other words, if I choose to spend the $950 today, in other words, if I decide not to lend the money or not to invest the money for a year, then what am I giving up? I am actually giving up this $50, which is equivalent to an opportunity cost of 5.26%. Okay, so ये वीडियो आप you guys might think ये वीडियो बहुत लंबी हो गई, but please note कि मैं जो वीडियोस बनाऊंगा वो डिटेल्ड वीडियोस होंगी. These videos are for students who of course, अब मैं सारे चैप्टर्स में इस तरह नहीं करूँगा, लेकिन कुछ जो क्रिटिकल कॉन्सेप्ट हैं जो मैं समझता हूँ जिनके ऊपर टाइम लगाना चाहिए, मैं उनके ऊपर टाइम लगाऊंगा. So whoever is interested in watching these videos, you guys are welcome to like and subscribe to the channel and leave your comment in the comment section below. Let me know what what chapters are you guys having difficulty with, so maybe we can go through them together later on. Or yeah, so it's been a long video, but anyway, I hope you found the content to be helpful, and I will see you guys in the next video. By the way, the next video is going to be the second part of this same learning objective. This is the first learning objective in this chapter or this learning module, right, which is interest rates and if I go to the first chapter, please note, interest rates in return is the learning this is the learning module, okay, and this is the learning objective, okay, this is the learning objective. And like I said कि इस learning objective के अंदर हमने सबसे पहला part हमने देख लिया हुआ है, which is basically the interpretation of interest rates, okay, as required rates of return, discount rates and opportunity cost. हमने ये पार्ट कवर कर लिया है. अब नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम लोग जो है नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस लर्निंग ऑब्जेक्टिव, यानी कि जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर हम लोग देखेंगे कि इंटरेस्ट रेट्स जो है वो किस तरीके से आर द सम ऑफ
real risk-free rates and other risk premiums. Okay. Okay, that's it for now. I will see you guys in the next video.